So I thought of doing a Charlie kind of a penguins kind of a video wherein I can talk about what I know and what I feel about things. So let's start from the top and the beginning. So basically the NEET paper is leaked. NEET paper leak hota hai, and due to it the pressure that kids feel that they have to go again for such an exam and they can't. They choose the act of committing suicide. Further which, going on, protests happen and the NEET examination happens again. NEET has been done, students are qualified. Basically, all those 20 lives that were lost in these exam protests are being fought for. We'll start over again. Okay, so basically what happens is NEET का exam होता है. NEET is an exam for, I guess, becoming a medical uh, professional, and it leaks. Basically, there's corruption in the levels and it leaks out, due to which exams are cancelled and are to be rescheduled, under the pressure of which many, I guess 20 students choose the act of committing suicide. Uh, for the fair fight, protests are held as there is no action in the scrutiny or authority level, basically, wherein some action should have been taken, which is fair and just and logical. That if your system has leaks, you need to, punish those leaks, basically. You need to get out the perpetrators. So a protest has taken place. Initially, the leading figure and authority for these NEET exam protests was Sonam Wangchuk with the CJP, Cockroach Janata Party, which is a scam, a different scam altogether. And even the image of Sonam Wangchuk is put into question through plenty of things. Sonam Wangchuk was not the guy Rancho played in Three Idiots, although he says it was inspired from him. But Amir Khan debates it, so I don't think so. We should take that angle or approach. What he did do is he built an ice stupa to get water in a scarce area. But what I also hear is that there are claims that his stupa wasn't as useful, as later down the people from who the water being pulled was, इट वॉज कैश फॉर देम, उनके लिए दिक्कत हो गई थी, तो उन्हें बेसिकली इसके अगेंस्ट विरोध करना पड़ गया था. फिर उन्होंने आर्मी वालों के लिए हीटेड रूम बनाया था एक, आई बिलीव. दैट्स नाइस. ही मेड अ स्कूल फॉर इनोवेटिव लर्निंग. अब इस सब की क्रेडिबिलिटी एंड लेजिबिलिटी नहीं पता, एंड लेट्स नॉट क्वेश्चन इट इवन. ऐसे तो हर चीज़ क्वेश्चनेबल है. नथिंग कैन बी गिवन अ गुड पर्सपेक्टिव. आई फील इट्स फेयर टू से ही वर्क्स इन द इंडियन इंटरेस्ट एज पर मी, एज उन्होंने बीच में फिर चाइना के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करा था दैट इंडिया नीड्स टू गेट सेल्फ रिलायंट एंड स्टॉप यूजिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स, which is a cause I believe in. And let's not look at what other things he has done, and let's take a look at what he has done currently. अगर एक घटिया आदमी भी सही बात बोल रहा है तो बात गलत नहीं हो जाती, बात तो बात रहती है. So yeah, he basically protests for the NEET aspirants that committed suicide with the CJP. A problem ये है, CJP is a leftist party, as very well explained by the thing that initially they said no party affiliation will be done, but later on, as we could see, there were members from plenty of parties. I believe Akhilesh Yadav's wife was there. There were uh, Communist Party members as well, and the founder of CJP, Abhijit Dipke, was just standing beside them, very subservient to them, I believe. So again, all the leftist parties were there. AISF, a leftist movement body, was also there. So it's less of a NEET movement and more of a leftist movement at this point, as in there were also plenty of issues with religion, wherein it could have been taken in harmony rather than in strife, is what was happened. लोगों ने नाम रहेगा अल्लाह का तो बहुत ब्यूटीफुली गाया, एंड एट द सेम टाइम मना कर दिया कि हम वो सब नहीं गाएंगे हिंदुओं के लिए. द सेम लेडी बेसिकली सेड शी वॉन्ट से जय श्री राम. ऑन द सेम प्रोटेस्ट देयर वाज अ लाइन दैट तुम कहो जय श्री राम, मैं कहूँगा जय संविधान. व्हेन डिड द नीट रिलेट टू अ जय श्री राम? जय श्री राम का नीट से क्या नाता था? You could have just kept that apart and it could have been a students' protest, but you had to bring in Hinduism.
just because the party that was in current ruling, BJP, has a Hindu angle to it. So you had to bring it in. You, I mean, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस में कभी ये सब नहीं हुआ. इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ पे है पंजाब, वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के दौरान लाठियों से मार मार के भगाया है. तो अगेन आई बिलीव ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो कि बेसिकली हमारा फ़ायदा ही उठा रहे हैं. अब जो जहाँ गलत है, नीट खराब गया, लोगों को नहीं पकड़ा गया, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी को एस्केप गोट ही बना देते कम से कम कि हमें लगता कि ठीक है इसने गलती करी थी इसको निकालो, बट किसी को नहीं निकाला गया. No one was reprimanded for it when they should have been. It's a very serious issue. People give these exams with quite a lot of dedication. And किसी को नहीं हटाया गया. That's sad. That's where the BJP and the current ruling government is wrong to not address this issue as it's a serious one. Where is the CJP wrong? Well, firstly, yeah, the dharam ka angle, unnecessary. Didn't have to bring it in. No one, no one personally liked that, I believe. And there are, of course, the leftists who are like, another thing. They had their spokesperson Kunal Kamra on the stage, wherein he said, ये सीता से पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम करे जा रहे हैं. And again, that's another thing that they didn't have to do, but they chose to do it, and they chose to stand by it as well. Had you apologized for bringing in religion into this, it could have been fine. And there are people who are defending this, with the fact being कि वो सीता के पति तो हैं, why are you being offended? That's like me saying a curse word to you. Let's suppose तेरी माँ की whatever that is, and I'm saying तेरी माँ की है ना वो. Why are you getting offended? नहीं है क्या तेरी माँ की? So you have no right to be offended now. Is that so? Or we do know how the language works, and there's some certain level of respect to be given in certain case and scenarios. Even keeping that aside, we could have seen Sonam Wangchuk was on a hunger strike basically, and वो 20 दिन मतलब I guess 17-18 दिन से कुछ नहीं खाए हुए थे, while other members of CJP were having crazy amounts of food. समोसे पकौड़े सब चल रहे हैं. किसी I mean यहीं पे आपका वो चला जाता है कि सिर्फ एक ही बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, आप सब प्रोटेस्ट के लिए हो ना उधर. तो एनीवे सोनम वांगचुक को फिर कोई प्ली डालता है, बिलीव जो होता है वो सीजीपी का ही स्पोक्स पर्सन होता है, वो प्ली डाल देता है कि सोनम वांगचुक की हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, डू समथिंग अबाउट इट. सो बेसिकली ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट देन सोनम वांगचुक को उठा के ले जाती है दिल्ली पुलिस, जहाँ पे लोग रोते हैं कि गवर्नमेंट ने उठा लिया, गवर्नमेंट ने उठा लिया. तो मेरे को तो यही दिखा कि प्ली तुम्हारी तरफ से थी, तो इसमें गवर्नमेंट का क्या दोष. सेकेंड टू दैट, अब अभिजीत दिपके ने कहा है कि ही विल स्टार्ट द हंगर स्ट्राइक, सो दैट्स गुड, बट आई बिलीव अगेन यू आर यूजिंग योर ओन मोटिव्स एंड एजेंडाज. आई बिलीव, मैं नहीं मानता वो दिल का साफ है, वो सिर्फ नीट के स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है सब. वी वेल इनफ नो उसके साथ कौन कौन जो खड़ा है, वो सारे अदर साइड ऑफ द पार्टीज हैं जो अभी इन पावर नहीं है. इन पावर वो होते तो वो भी उतने ही स्कैमिया होते. What I do believe is yes, BJP does need to take some action. उसको निकालना चाहिए किसी ना किसी को, अदरवाइज इट्स प्रिटी पॉइंटलेस. एंड इग्नोरेंस वॉज रॉन्ग. अगर प्रोटेस्ट हुआ था इतना लंबा, डायलॉग किया जा सकता था. चाहे डायलॉग का आउटकम आप फेवर में नहीं देते, बट डायलॉग होना चाहिए था. इट शुड हैव बीन हर्ड टू. कोई आके बोलना चाहिए था, वी आर रेडी टू टॉक, गिव अस योर टर्म्स, वी विल टेल यू व्हाट्स पॉसिबल, व्हाट्स नॉट, एंड व्हाई नॉट. That's how accountability basically should work. So ignorance was not a good thing on the part of the ruling government. Now, another thing I want to address is the Sarv Agyat people of Instagram. If I tell you honestly, Insta की stories अगर 100% डली है ना, एक्चुअल प्रोटेस्ट पे 10% लोग भी नहीं होंगे. एंड दैट्स लाइक द वही वाली वो मंदिर में पूजा वाली बात कि दिखावे के लिए सब गए हैं, बट एक्चुअल पूजा कोई नहीं कर रहा. सबको स्टोरी डालनी है अपने घर के कंफर्ट से. आई मीन हाउ वुड इट हैव बीन अगर उस समय अंग्रेज़ों के समय भी यही होता कि हाँ भाई मेरे प्रोटेस्ट के लिए ये लो मेरी चिट्ठी एंड मैं अब अपना दिन कंटिन्यू करना चाहूँगा. सो काइंड ऑफ बॉइल्स माई ब्लड
टू सी सच पीपल एज वेल, जो कि बस स्टोरी डाल रहे हैं and सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ करा है। नहीं करा। आप अनलेस एंड अनटिल फिजिकली कहीं गए, इट्स लाइक वो मान लो सलमान खान ऐश्वर्या राय सिनेरियो। सलमान खान डिड सो मेनी क्राइम्स, बट सब लोग बस उस समय स्टोरी 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 डाल रहे थे। स्टोरी पे किसी को हवा ही नहीं लगी, वो घर पे बैठा रहा चुपचाप, कोई उसे लेने नहीं गया, कोई उसे उठा के कहीं डाला नहीं। वो अभी भी मस्त मूवीज़ बना रहा है, घूम रहा है, सब भूल चुके हैं अब। सो अगेन आपकी स्टोरी एक पॉइंट तक नेसेसरी है, आफ्टर दैट पॉइंटलेस है। आई बिलीव एट दिस पॉइंट तो जितनी भी स्टोरीज डल रही हैं आप पॉइंटलेस हो चुकी हैं। जितना मूवमेंट और वो होना था हो चुका है। आप अगर उसमें नहीं गए हो तो आप 5% कंट्रीब्यूटर कह सकते हो। ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं करा आपने, यू डिड हेल्प एम्पलीफाई द मूवमेंट, बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट बडी। डोंट यू डेयर कॉल योर सेल्फ अ फ्रीडम फाइटर फॉर इट। तुमने अपने घर से बस एक टैप ऑफ अ बटन करा है, इट डज नॉट टेक मच। एंड अगेन फिर बहुत लोग हैं हमारे देश में ऐसा, हमारे देश के वो हमारी डेमोक्रेसी नहीं है। आई मीन द फैक्ट कि तुम प्रोटेस्ट कर पा रहे हो इज़ नाइस। इग्नोरेंट है। आई विल ऑल्सो नॉट से द गवर्नमेंट इज़ नाइस, द करंट गवर्नमेंट इज़ नॉट। बात रही एजुकेशन रिफॉर्म्स की, तो दे आर रिक्वायर्ड बट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर लीकिंग। रिजर्वेशंस अगेन इज़ दैट नॉट। मान लो मैं एक जनरल का स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर दिया, एक रिजर्व्ड स्टूडेंट ने पेपर दिया, एंड कल को उसका हो जाता है ऑन लेसर मेरिट देन मी। मैंने इतनी मेहनत करके वो स्कोर मार्क लाया, बट उसको मिल रही है सीट बिकॉज ही इज़ रिजर्व्ड। बट अगेन नहीं, अगेन ही गॉट द सीट बिकॉज ही इज़ रिजर्व्ड। वो फाइनेंशियल एंगल बाद में डिस्कस करूँगा, बट ही गॉट द सीट बिकॉज ही इज़ रिजर्व्ड एंड कमिट सुसाइड। करेगा कोई मेरे लिए प्रोटेस्ट? इसका हुआ इसका स्कोप चेक करा भी गया है कि कितने लोगों ने सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट करा है क्योंकि किसी जनरल के बच्चे ने अपनी जान ली क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पाया। एंड जस्ट बिकॉज मैं दम घोट के जी रहा हूँ उसका मतलब ये थोड़ी है कि इट्स नॉट रॉन्ग। गलत है भाई। फाइनेंशियली वेल बैक्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं नीट के बच्चे, फिर भी इनको रिजर्वेशन चाहिए, मिल रहा है इनफैक्ट, चाहिए भी, मिल भी रहा है। जनरल का बच्चा मर जाए तो भी हु गिव्स वन, बिकॉज दैट्स अ पॉलिटिकल एजेंडा। नाउ वेयर डू आई फील द प्रोटेस्ट लैंड्स एंड स्टैंड्स ऑन? I feel until and unless you have some power, 2 दिन के प्रोटेस्ट के बाद इट्स पॉइंटलेस। क्योंकि फिर आप 5 साल भी बैठे रहो, अगर दे कैन इग्नोर यू, दे विल इग्नोर यू। आई बिलीव इट्स दैट इजी टू इग्नोर यू देन। जैसे कि रिजर्वेशन क्यों नहीं हटता, वी ऑल नो, बिकॉज देर इज़ गवर्नमेंट पॉलिटिकल बैकिंग टू इट। आपके सारे SC ST वालों के वोट्स दूसरी तरफ चले जाएंगे, आप नहीं रहोगे पावर में, उनको लाना पड़ जाएगा रिजर्वेशन वापस। इट्स जस्ट सिंपल अपीजमेंट। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स नीट का प्रोटेस्ट। नीट के सिर्फ उसके लिए है। एंड बात रही रिजिग्नेशन की भी, तो आई डोंट नो हाउ जस्टिफाइड ऑफ अ प्लान दैट इज़। आई मीन रिज़ाइन करने से क्या करप्शन ख़त्म हो जाएगा? सिर्फ एक ही बंदा करप्ट था? इज़ दैट द केस? बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हर कोई यहाँ मिला हुआ है, घुमा हुआ है, बैठा हुआ है। वेल आई बिलीव दैट्स ऑल। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कवर कर लिए जो कि काफ़ी नकली हैं। हर जगह कुछ और ना कुछ चल रहा है। रिलीजन शुड नॉट हैव बीन ब्रॉट इन टू दिस, एंड द एजुकेशन सिस्टम नीड्स रिफॉर्म्स मोर देन जस्ट द पेपर्स बीइंग लीक्ड. There are not just the papers that are to be discussed. Baki, I'd like to see if someone has commented, so I could maybe provide my opinion on that as well. Dun, 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 dun. Arey, hello Mukund sir. Sorry to miss that out, but I just thought of doing a take like video. I think from here would be better. Hello to the 2 people watching. Hello to the 4 people watching. Okay, that jumped up quite a bit. Uh, I guess that's all I have to speak. I believe इसके ज़्यादा कोई pointers बचे हैं क्या? Let me just check. हाँ, another thing I'd like to cover is
The fact that we are questioning the NEET papers because of the suicide is not justified. Firstly, पॉइंट वन, जस्ट मतलब किसी को जान लेने वाले पॉइंट पे आना नहीं चाहिए ना. प्रिवेंटेटिव बनो rather than procuring afterwards. Prevent it hopefully and see that how society and system has shaped those children that उन्हें उन्होंने सोचा जान दे देते हैं rather than पेपर देते हैं. So that speaks a lot on pressure as well. Just like Rancho said that it's the stress here built through society only. I don't think so. It's anything just about the papers leak हुए गलत हुआ, no doubt infrastructural issue है, there is a problem with the infra in it, but I mean we need to talk about how society functions, that students think that it's better to die than give another attempt at a paper. Sure, मेहनत लगी है उसके पीछे, बट बहुत लोगों की बहुत चीज़ों के पीछे लगी है, and I'm not saying things shouldn't have a consequence, but this shouldn't be the consequence, I believe. So that is something we can look at. Again, the current system and the leaders present in it are wrong. I do believe there should have been some culprits that should have been punished. Sonam Wangchuk is a debated figure. As far as I have heard things for him, I think he's a nice guy. I don't know. I maybe need some more evidence on what he has done wrong, and I'm happily willing to say he's wrong if that's the case. I believe there is a bill known as the FCRA that's coming up that will basically expose all the funding that NGO gets from international locations. And I believe, why is that wrong? अगर तुम्हारे देश में big funds आ रहे हैं, you should track them. You should see what's happening with them. सही कर रहे हो तो डर किस बात का है? आई मीन आफ्टर ऑल द कौन से ओलंपिक स्कैम थे यहाँ पे सोप होल्डर्स 8,000 के खरीदे गए थे. आई बिलीव गेम्स वेम्स थे कोई. बाकी the NEET protests were sadly taken over by the leftist movement rather than the NEET protest. You had to bring in religion into it, not necessary. The education needs reforms other than just the paper leaks. And thank you for the stories on Instagram, but actual हाथ बटा लो rather than अपने घर की मौत से to actually call yourself a part of the protest. I believe I've covered everything and there are no more questions or doubts, so that's all. Thank you for watching, and you will see me dead or alive.